Above the noise. Maintaining integrity in the face of defamation. पुरुषार्थी जीवन में हाँ सर्विस फील्ड में रहते हैं तो कोई कुछ बोल दिया, हाँ, तो वो बार बार अमृत वेले में याद आता है या क्लास में याद आता है, हाँ, तो इसका प्रभाव विराट ड्रामा में क्या पड़ेगा? Student, in the Purusharthi life, we stay in the service field. If someone says something, we remember it at Amrit Vela repeatedly or in the class. What will be its influence in the broad drama? देवान है तो याद आता है. Baba, if you have body consciousness, you remember it. नहीं, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, कड़वी बात. ओहो, किसी ने कुछ भी बोल दिया. Student, if someone said something wrong, something bitter, Baba, oh, someone may have said something wrong to you. अपने मुख से बोल दिया या तुम्हारे मुख से पाप किया. Did he speak through his mouth or did he commit sin through your mouth? हमारे मुंह से किया, तुम्हारे मुंह से किया, उसके मुंह से बोला. अपने मुंह से पाप किया ना. Student, through my mouth. Did he commit through your mouth? Student, it came out of his mouth. He committed sin through his mouth, didn't he? अपनी कर्मेंद्रियों से पाप किया ना. He committed sin through his karmendriya, didn't he? तुम काहे के लिए परेशान होते हो? कोई ने गाली दी, कोई ने ग्लानि की, तुम्हारी वो चिपक गई. Why do you become restless? If someone insulted you, defamed you, did it stick to you? तो हमारे ऊपर विराट ड्रामा में ग्लानि चिपक गई. Student, in the broad drama, honors, Baba, did defamation stick to you? हाँ, क्यों चिपक गई? उसका कारण ढूंढो. Why did it stick? Find out its reason. रुको. Another student, Baba, wait. वो ग्लानि क्यों चिपक गई तुमको? क्यों तुम्हें रात भर बाबा की याद नहीं आई? बोई बातें बार बार याद आती हैं. Why did the defamation stick? Why didn't you remember Baba throughout the night? Why do you remember those very things again and again? क्योंकि हमारे अंदर देवभान भरा हुआ है. It is because we are full of body consciousness. उदय अहंकार हमको किसी की बात सुनने नहीं देता. That bodily ego doesn't let us listen to anyone. हम अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं. We consider ourselves to be very knowledgeable. ज्ञानी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति की क्षमता हो. The one who has the ability to tolerate is knowledgeable. कितना भी डिससर्विस करने वाला हमारे सामने आ जाए, विपरीत बुद्धि, विपरीत वाचा बोलने वाला, हम उसकी हर बात को सहन कर जाएं. No matter if someone who does a lot of disservice comes in front of us, the one with an opposing intellect, the one who speaks opposite to what the Father says, comes in front of us, we should tolerate each of his word. उसको सुख देने का प्रयत्न करें. We should try to give him happiness. दुख देने का प्रयत्न न करें. We shouldn't try to give him sorrow. उसका मुकाबला करके उसको नीचे गिराने की कोशिश न करें. We shouldn't try to down him by facing him. ये ब्राह्मणों का सेवा धर्म है. This is the religion of service of the Brahmins. सेवक, We are servants. सेवक बन करके हम दूसरों के सामने ज्ञान सुनाने जाएं. We should go to narrate knowledge, becoming a servant in front of others. गुरु बन करके नहीं. We shouldn't go becoming a guru. जैसे दुनिया भी गुरु होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उनको. Just like there are worldly gurus, they become angry very soon. गुरुओं को क्रोध आता है कि नहीं? Do the gurus become angry or not? उनसे थोड़े प्रश्न करो और फटाक से उनको जोर से क्रोध आ जाता है. Ask them a few questions, they immediately become severely angry.